everyone. Namaste. How are you all today? I'm Shruti Tiwari. I'm your VARC trainer from Top Rankers SGCAT. Am I perfectly audible and am I visible to you? Just give me a thumbs up. If everything is all right, we can start the session. All right. So just 2 days are left for XAT, and I'm sure your XAT preparation is going in full fervor. So, hi Kashish. All right. So, I'm here today to discuss some important question variety of critical reasoning for that. Although I have done this session once earlier, but then that session was specifically for PYQs. I've discussed a lot of PYQs in that session. This is basically a kind of revision so that when you sit with me, solve the questions with me, you are exactly in line with that critical reasoning questions. All right. So I I'm sure कि critical reasoning तुम लोगों ने काफी अच्छे से revise कर लिया है. You understand the concepts. Still, we'll have a quick revision of critical reasoning because, as the name suggests, it is critical. You know, तो जब patient critical condition में होता है, तो बहुत आराम से, बहुत सावधानी से we need to operate, isn't it? All right. So jokes apart, let's begin the session. All right. Critical reasoning requires a systematic thinking. A frame of mind is required, and for that we need to build up. All right. Basically, I would suggest that you are just, on the cusp of entering into your career with that. All right. You can enter into your own choice of B school because that will open doors for you, provided that you have patience, endurance to sit for 3.5 hours. All right. And critical reasoning plays a vital role in that because most of the questions, whether they are of reading comprehension or they are specifically those 5 questions of critical reasoning, you need that set, of mindset or the frame of mind, to go ahead. So I'm sure you all are now with me. Shall we start? All right. Without further ado, let's get started. Okay. So a quick review of the major question variety which is asked in XAT. The first one is weaken the argument or find the flaw in the argument. So for that, you need to understand basically what is an argument. Okay. What's an, oh, I'm so sorry. Okay. So what's an argument? Do you remember? What do you mean by argument? Argument means the author's conclusion based on some logic, okay, or a line of reasoning. So that's basically the argument. And what are you asked to do? You're supposed to choose an option which either weakens the argument or it strengthens the argument. All right. So which option would weaken the argument? Obviously, for this variety of question, what you're supposed to do, you have to target author's line of reasoning. In order to weaken the author's argument, you have to target the line of reasoning. And in order to strengthen the argument of the author, you have to add on to or strengthen the
line of reasoning of the author. So basically you have to focus on author ने conclusion किस reasoning के base पे किया है, वो conclusion का line of reasoning कहाँ जा रहा है. That is something which you need to focus on. Another very famous variety of question is assumption. What do you mean by assumption? Assumption का मतलब क्या होता है? Assumption means what is taken for granted. Taken for granted. That means it has to be true. It has to be true in order for statement to be true. All right. Author अगर कोई statement दे रहा है तो उसका जो assumption है that becomes the base of that statement. So in order for that statement to be true, that assumption has to be taken for granted. That is the assumption. Again, this is the logic or the reason, or we can say that it is the something which is like evidence. All right, on which the author is concluding. So that is the author's assumption. Another very famous and very popular, variety of question is inference and conclusion questions. What is the difference between inference and conclusion? Inference is something which reader concludes, all right, after reading the passage, after the passage, or after, I'm sorry, reading the passage. All right. And what is the conclusion? As I told you, conclusion is always drawn by the author. All right. Whatever facts, whatever reason he has, on the basis of that particular reason, he would be concluding something. So that is the conclusion. So these are the questions which they generally ask, that which is the most appropriate or the most pertinent conclusion drawn by the author, or it can be inferred from the passage. All right. Then coming to resolve the paradox. Structure of the argument, as I told you, what is the reason behind the argument, or which of the following options, add value to the argument, such kind of questions are asked. Now, the last variety is resolve the apparent paradox. Paradox in XAT critical reasoning is not the real paradox, it is always apparent. Why am I saying that it is apparent paradox? Because it seems to be paradoxical. Paradox का मतलब मालूम है ना? विरोधाभास. ठीक है? That means two mutually opposite things coexisting, which seem to be impossible, but they are not. All right. So in that critical reasoning, you'll always have apparent paradox in the sense that it seems to be paradoxical. Why? Because वहां पर कोई important reason या एक important fact उसमें से छुपा लिया गया है. They have taken that from there and they have kept it in the option. तो वो दोनों चीजें जो है वो mutually inconsistent लगती है पढ़ने में. ठीक है. And then they ask you to resolve the paradox. So option में से वो option choose करना है जिसको अगर हम बीच में fit कर देते हैं तो इन दोनों के बीच का जो contradiction है वो हट जाता है. And then you feel that okay, this is absolutely correct. For example, if I say that women are multitaskers, they do domestic chores and they are very good at office work as well. Men lag behind. Now, then I say that women are very, progressive in their career. Now, there is an apparent paradox. Why? Because I say that women are involved in so many things that they are multitaskers, all right? And then I say that they are doing something for their career, that is single focus minded. So that is an apparent paradox. Once I say that they have distributed their day in doing lot of different things, all right? And then I say that they are very particular about, or they are very progressive about their career. So there is an apparent paradox here. All right. So now you have to resolve this paradox. So probably there will be an option which would be talking about some reason which would
resolve this paradox that probably, working women, set things, appropriately and focus on their career, or their multitasking adds on to their professional growth, something like that, which would resolve the apparent paradox. All right. So that is what you have to look for. Okay, let's move ahead. What you need to avoid. First thing, reading without knowing why. All right, this is something which I really hate. You are doing anything in your life without even knowing why you are doing it is something which you should absolutely, absolutely avoid. All right. So basically, you need to understand what's the point. Why am I reading this? All right. Why am I asked to read this? ऐसा नहीं कि जैसे क्वेश्चन देखा तुरंत जंप किया और पैसेज पढ़ने लगे. You should always read the question stem first. Read the question stem first. What is the question asking you to do? Is it asking you to weaken the argument? Is it asking you to strengthen the argument? Is it asking you to conclude? What is the best conclusion? Is it asking you to resolve the paradox? What is the purpose of you reading that passage? All right. So that will solve a lot of your problems and your life will be easier. All right. So basically, when you do not know why you're reading the passage, you basically miss the heart of the passage. All right, you'll not be able to understand the crux of it. And hence, you'll always find all the options correct or all the options wrong, or probably two or three options correct, and you'll always be confused. So, it's very, very important that you understand why you are reading. Am I making sense? All right. Then, next, falling in love with answer choice. This is another thing which is, a trap probably, or it is out of your ignorance that you do that. You have temptations of marking an answer. You have read the passage, now you have made up a mind that whatever you have understood is the absolute truth, and accordingly you find some or the other option which is so, alluring, something which is so tempting that you get sucked in that and you mark that and move ahead. You feel that this is the only option. So my suggestion is, don't get into that. You should always, always, believe in or rely on eliminating. So eliminate the obvious, obviously wrong answers. How will you identify these obviously wrong answers? Come on, tell me. I've told you that earlier also. Which are the obviously wrong answers? Which have words like only, or maybe solely, or not at all, or none. Always. It is always like this. It has to be or have to be. है ना? तो ये कुछ words हैं जैसे each और every. तो आपका जो passage है, it is talking about some condition in which certain things happen. And then some options will be talking about every time this happens, or it is the only thing which will happen. So these are extremes. Okay, so you should always, most of the times these options are wrong. All right. So you should be aware of that, and you should first eliminate the obviously wrong options so that you are able to jump on, or you can compare, the best possible options. All right. Now coming to next. Oh, let me clear this. Okay. So anticipating the correct answer
incorrectly. Now, first I told you that you do not eliminate the wrong option, you look for the right answer. All right, that's the incorrect approach. If you look for correct answer, you'll find all the options correct or most of these options correct. But if you have that balance of mind and you're able to locate the wrong things in the wrong options, then you'll come closer to accurate answers. All right. So I would suggest that go for elimination and avoid, no, I should not write here. Avoid preconceived notions और pre-thinking. अपने दिमाग में पहले से ही प्रेजुडाइज लेके नहीं चलना है, ठीक है? All right. Next is word watching. All right. और I would say, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, hunting. वर्ड हंटिंग नहीं करना है. मोस्ट ऑफ यू एंड अप मार्किंग रॉन्ग आंसर्स बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, हम मैच करने लग जाते हैं कि पैसेज में जो वर्ड्स यूज किए हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स अगर रेप्लिकेट हो गए हैं तो दैट्स द करेक्ट आंसर. इट मे हैपन दैट इट वुड लीड यू टू अ ट्रैप. कैसे? मैंने पिछली बार भी बताया था दैट द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पैसेज. उसमें से कोई ना कोई सेंटेंस का रेप्लिकेशन करके दिया है, एग्जैक्ट वर्ड्स भी यूज किए हैं. बट आफ्टर अ कॉमा जो सेकेंड हाफ है ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. नाउ क्योंकि तुम वर्ड हंटिंग कर रहे हो, तुमने क्या किया? पैसेज से उसको कंपेयर किया एंड यू मार्क द आंसर एज राइट आंसर, बट अल्टीमेटली इट एंड्स अप बिकमिंग अ रॉन्ग आंसर. ठीक है? So these are the things which you should avoid. While we will be solving those questions and practicing, you should keep that in mind. Reading without why, that means you should avoid that. You should read the question stem first, understand why you are supposed to read the passage. Falling in love with answer choices, you should avoid doing that. You should first eliminate the obviously wrong answers. You should not anticipate the correct answer, but you should be comparing that. Compare. All right. Answer choice को हमेशा compare करो, eliminate करो obviously wrong को, and then you go for the answer. And last is word watching. Do not get trapped by this, hunting of words. It may happen, देखो दोनों चीजें होती हैं ZAT में. It may happen that paraphrased वाला जो option है, जिसमें exact words repeat नहीं हुए हैं, that becomes the answer. And it could happen vice versa even, that they take exact words, exactly in same sequence, and they do not, make any trap out of it, and it happens to be the right answer. It may happen either ways. All right. So you should not get confused with that. Word hunting karte rahoge, so you'll waste lot of time rather than saving your time. Am I making sense? Are you with me? All right, let's move to the question solving. So this is the first question. Am I blocking your screen? Okay. I should move out of the screen then. Here. I'm off the screen now. You can read properly and then answer. Okay. I'm sorry for that. Please read the question stem first. What is it asking you? Which one of the following is an assumption on which the argument depends? All right. So first read the question stem, understand that you have to look for assumption. And what is the assumption? That is the line of reasoning which the author is adapting
to draw a conclusion. All right. So while you read, you should focus on line of reasoning of the author. As I told you, don't jump on the answers, don't rush for it. This is that critical reasoning. Take your time, understand, compare, eliminate, and then mark the answer. Okay, Anish, you've got the answer. Yes, we will discuss. Don't worry. Whatever is your answer, whatever is your choice, you can write it. And don't worry, even if it is wrong. All right, we'll practice. By the end of the session, you'll be able to come to the right answers. You'll know the trick and the approach to solve the questions. All right. Hi, Sayantan. Okay, let's discuss now. Which one of the following is an assumption on which the argument depends? So that means you have to look for the assumption, and that is the reason. All right. So which reason here, out of these options, which is the reason for the author's argument? So argument of the author is the conclusion which he is drawing. All right. A recent study indicates that regular consumption of blueberries is linked to improved memory function. So this says a recent study indicates, okay, participants who consumed a cup of blueberries daily showed significant improvement in memory tests compared to those who didn't. So इसमें कुछ participants थे जिन्होंने एक कप ब्लूबेरीज रोज खाई और कुछ participants थे जिन्होंने नहीं खाए. So मेमोरी टेस्ट जो हुआ उस स्टडी में उसमें उन्होंने बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया है. किन्होंने? जिन्होंने ब्लूबेरीज कंज्यूम किया. उसके कारण ऑथर क्या कंक्लूड कर रहा है? Hence, incorporating blueberries into one's diet could be a natural way to enhance memory. ये ऑथर का कंक्लूजन है. This is author's conclusion. ये किस line of reasoning पे बेस्ड है? What is the line of reasoning? That is this study. इस स्टडी के बेसिस पे वो ये कह रहा है. ठीक है. क्या कि ब्लूबेरीज खाने से या डाइट में ब्लूबेरीज इंक्लूड करने से आपकी मेमोरी एनहांस होती है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शंस. सबसे पहले क्या करना है? ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शंस जो हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे. ठीक है. It says there are no other natural foods capable of improving memory function as effectively as blueberries. So this is extreme. So this is eliminated. All right. The participants in the study did not consume any other memory enhancing foods during the study period. Is that being talked about here? That whether they consumed any other thing or they did not? It's not being talked about. All right. He is more interested in the consumption of blueberries. He's not interested in what other things have been consumed or has anything else been consumed or no. But still, it's not very obviously wrong. We keep it on hold. Blueberries contain unique nutrients that are directly responsible for improving memory function. Now it is talking about blueberries, it is talking about nutrients in blueberries, and it is talking about improving memory function. So let's keep this also on hold. Memory improvement is solely dependent on dietary factors and not on other lifestyle choices. So again, as I told you,
whenever an option is talking about that this is the only thing possible, then it is most of the times wrong. This is extreme option. ये कह रहा है memory improvement is solely dependent on dietary factors. कोई और ऑप्शन, कोई और चीज तो है ही नहीं, लाइफस्टाइल की दूसरी चीजें तो उसके लिए लागू होती ही नहीं है. That's not the author's, assumption. That's not the author's conclusion as well. वो तो सिर्फ इतना कह रहा है कि लाइफ में डाइट में अपने ब्लूबेरीज को इंक्लूड करने से काफी सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट होता है मेमोरी का. दूसरी चीजों के ऊपर उसका फोकस नहीं है. ठीक है. The memory tests used in the study are accurate indicators of general memory function improvements. So he is talking about the memory tests which he has taken as the base for the conclusion here. So this is again on hold. We have eliminated two options which are absolutely or obviously wrong. देखते से ही गलत लग रहे हैं. ठीक है. Now let us compare. All right. अब जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो एक लिटमस टेस्ट बता रही हूँ. लिटमस टेस्ट पता है तुमको क्या होता है? जो तुमने मेरे ख्याल से 8th 9th में किया होगा, सीखा होगा केमिस्ट्री में, टू टेस्ट वेदर समथिंग इज एसिड और बेस. ठीक है. सो दैट इज लिटमस टेस्ट. ऑन व्हाट ग्राउंड्स डू वी डू दिस टेस्ट? Just say no to all the options. Assumption मैंने तुम्हें बताया था. Assumption क्या होता है? Something which has to be true in order for this conclusion to be true. If this assumption is negated, I cannot draw this conclusion. Yes Neha, absolutely. Acid base indicator. ठीक है. So बेसिकली हमें क्या करना है, क्या लिटमस टेस्ट लेना है? जस्ट से नो. ऑलराइट. जस्ट से ऑपोजिट ऑफ दिस. इफ आई से नो टू दिस एंड आई कैन नॉट ड्रॉ दिस कंक्लूजन, दैट मीन्स दिस इज पर्टिनेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट दिस यू कैन नॉट एक्चुअली draw the conclusion. So let's do it. The participants in the study did not consume any other memory enhancing foods during the study period. Now, if I say that the participants in the study consumed some other memory enhancing foods during the study, can I draw this conclusion? Yes, there is no harm in that. Even if participants consumed something else also, blueberries ka addition is enhancing their memory. So even without this, I can draw the conclusion, and hence this is not a strong assumption. If I say blueberries contain unique nutrients that are directly responsible for improving memory function, now I say no to this. Let's see what happens. It says blueberry contain unique nutrients that are not directly responsible. So they are not directly responsible for improving memory function, but they are maybe supplements. Then also author can draw this conclusion that addition of blueberries is a natural way to enhance memory. He is not saying that that is the only way possible, or he is not saying that it is directly responsible for that. He is just saying that addition to this will add on to memory enhancement. So again, without this, I can make conclusion. But when I say E, it says the memory tests used in the study are accurate indicators of general memory function improvement. And I say no to this. I say no, they are not accurate. They are wrong indicators. Or maybe they are inadequate. They are inadequate indicators. Can the author draw this conclusion now? Can he say, because he has based his conclusion on this study and the memory test which they have conducted. अगर मैंने इसको डिफीट कर दिया तो फिर मैं ऑथर के कंक्लूजन की तरफ नहीं जा सकती. So without this I cannot draw conclusion, and hence this has to be true in order to prove this, or for the author to make this conclusion, and hence the answer is E. Am I making sense to you?
Are you with me? Okay, let's move on. If in case you have any doubt, you can ask. Okay, so this is the next question. What will you do first? First, read the question stem. The public health advocates' arguments depend on assuming which one of the following. So public health advocate का argument किस पे depend करता है? That means the line of reasoning or authors, or here it is public health advocates conclusion. That is what you have to look for. All right. I hope you've read it. Shall we solve together? It says public health advocate to address the obesity epidemic, our city has implemented a tax on sugary drinks. While critics argue that this infringes on personal choice, research shows that such taxes significantly reduce consumption of these unhealthy beverages. By decreasing sugary drink consumption, we aim to improve public health and reduce healthcare cost. So what is the line of reasoning for the public health advocate here? They want to attack the obesity epidemic, and for that they have implemented a tax with the reason that it will significantly reduce the consumption of these sugary drinks or unhealthy beverages. All right. So now what would be the assumption? अगेन ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शन जो है उसको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे. तो पढ़ते हैं. The reduction in sugary drink consumption due to the tax will lead to a measurable decrease in the overall calorie intake of the city's population. All right. So that is what they are aiming at.
Maybe, may not be, but it's not very obviously wrong. The health risks associated with sugary drinks are significantly higher than those associated with other commonly consumed beverages. तो शुगरी ड्रिंक्स के साथ में हेल्थ रिस्क ज्यादा है, यहां तक तो वो बिल्कुल सही बोल रहा है. But when he says it is higher than other beverages, that is beyond context of the passage. They have not actually compared it with any other beverage. So this is obviously wrong. So it is eliminated. Then sugary drink consumption is a primary factor in prevalence of obesity. Sugary drink consumption is a primary factor in prevalence of obesity and related health issues within the city. And that's what he is actually addressing. All right. So this seems to be the answer, but I'm not sure. अभी मैंने आगे के दो options नहीं देखे हैं. So I'll keep it on hold. The tax on sugary drinks will result in a substantial increase in funding for public health initiatives aimed at combating obesity. So यहाँ पर funding को लेकर कोई बात नहीं हुई है. ठीक है? It is only talking about reducing healthcare costs. It is not saying that it will enhance their funding. So ये बिल्कुल भी इसके साथ line up नहीं हो रहा है. So this is obviously wrong. The imposition of the tax will lead to a meaningful shift in the beverage choice of the population towards healthier alternatives. तो अगेन जैसे बी में भी वो बता रहा है दूसरे ब्रेवरेजेस के बारे में, यहां पर भी वो हेल्थियर अल्टरनेटिव्स की बात कर रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. हाय हार्दिक, हाउ आर यू? So now we are left with two options only. All right. And now is the time for litmus test. ठीक है, क्या करेंगे? इसको नो करेंगे. The reduction in sugary drink consumption due to tax will lead to a measurable decrease. So I say measurable increase in the overall calorie intake, or it will not decrease the overall calorie intake of city's population. All right. Can I make this statement then? By decreasing sugary drink consumption. Yes, I can, because I'm not interested in calorie right now. It's not talking about overall calorie intake of the city's population. It is only talking about people who are obese. All right. So reduction in sugary drink consumption due to tax may or may not lead to measurable decrease. It may lead to some decrease, or it may not decrease the overall calorie intake. It might decrease, a little calorie intake of probably not the city's overall population, but people who are obese. All right. And hence, this is not very strong assumption. But when I say no to this, sugary drink consumption is primary factor in prevalence of obesity. If I say it's not the primary factor, it is probably a secondary factor, or probably it is not that important factor. Can I make this statement? I cannot make this statement at all, because ये पूरा का पूरा passage और इसका conclusion इसी के ऊपर टिका हुआ है कि वो शुगर और शुगरी ड्रिंक्स को उसका प्राइमरी फैक्टर मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने उसी के ऊपर टैक्स लगाया है. So if I defeat this option or this assumption, I cannot make this conclusion, and hence this is the strongest option. Am I making sense? Any doubt in this question? Are you with me?
Neha, actually, this is time-tested technique. It will always uh, make you come closer to accurate answer. अगर आपने assumption को negate कर दिया और उसके बाद भी कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, वो शायद सेकेंडरी रीजन होगा या एडिशनल रीजन होगा। बट अगर आपने उस अजम्पशन को डिफीट करा या जो ऑप्शन आपको दिया है उसकी रीजन को डिफीट किया, एंड यू कैन नॉट बाय एनी वेज मेक दैट कंक्लूजन, देन तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस कंक्लूजन का बेस क्या है? वही ऑप्शन है। बिना उसके आप उसको कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अजम्पशन की डेफिनेशन ही यही है। हमने इनिशियल जब सेशन स्टार्ट किया था तो यही समझा था कि अजम्पशन का मतलब ही क्या होता है। अजम्पशन इज द बेस ऑन विच द ऑथर इज गिविंग एन आर्ग्यूमेंट। तो अगर हमने उस अजम्पशन को डिफीट कर दिया तो वो आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं सकता। और यही इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अजम्पशन। थैंक यू सो मच रोहन, I'm sure this session will also help you. All right. My aim is to ensure that we ace this critical reasoning. All right. Let's move ahead. Read the question statement. Which one of the following, if assumed, enables the argument's conclusion to be properly drawn? So again, argument's conclusion to be properly drawn. So we have to focus on assumption. That is, you have to identify what is the line of reasoning. किस रीजन के बेसिस पे ऑथर कंक्लूड कर रहा है, ठीक है? एंड माइंड यू, यू शुड नॉट हैव एनी प्रेजुडाइज। ऑलराइट, कीप अवे फ्रॉम एनी कलर्ड ग्लासेस। ऑलराइट, first identify the obviously wrong answers. Either they are extremes, out of context. Let's see whether you are able to identify them now. चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ ऑब्वियसली रॉन्ग कौन कौन से हैं। आई डोंट वांट यू टू फोकस ऑन द राइट आंसर राइट नाउ। Yes, Neha, absolutely. A is the obviously wrong answer. What is the reason? It says it is the only way to ensure. Is the author trying to say that? Is he advocating that it is the only way? No. So this is obviously wrong.
All right. Legal recognition and protection of same-sex union would lead to societal acceptance of LGBTQ. So is he talking about that? He is only saying that traditional values and political resistance continue to impede full acceptance. Whether it is social acceptance, it is basically acceptance, after legal recognition. That's not which is being talked about. So it's not that legal recognition and protection of same sex would lead to social acceptance. He is only saying that it is impeding social acceptance nahi ho pa raha hai. So this is again obviously wrong answer. You're absolutely right, Sandon. Now come to, is there any other option which is obviously wrong? Do you find D also obviously wrong? Without the Supreme Court's intervention, Parliament is unlikely to address the issue of same-sex marriage legalization. Is that actually addressed here? He is saying India's Supreme Court rejected an appeal to legalize same-sex marriage, directing the matter to Parliament. Whether the Parliament will be able to take the decision or no, और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है या नहीं, इसके बारे में कहीं कोई कंक्लूजन है क्या? नहीं. So this is obviously wrong out of context. Now you're left with two options, B and C. अब लिटमस टेस्ट लगाओ. Say no to this and say no to this. And see, किसके बिना तुम कंक्लूड कर ही नहीं सकते. क्या कंक्लूजन है ऑथर का? कि the decision has disappointed LGBTQ activists, highlighting ongoing challenge in a society where traditional values and political resistance continue to impede full acceptance and rights for the LGBTQ community. So he is saying that the decision has disappointed the activists because these are the challenges which continue to impede the acceptance. Now, if I say the Supreme Court has the authority to legalize same-sex marriage but choose to defer to Parliament, now even मतलब ये जो अथॉरिटी वाली बात है, ये तो इससे फर्स्ट वाले सेंटेंस से पता चल जाती है. द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड एन अपील. रिजेक्टेड एन अपील मतलब रिजेक्ट कौन कर सकता है? जिसके पास अथॉरिटी होगी. तो ये एक अजम्पशन थोड़ी ना है. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच ही हैज ऑलरेडी डन. सो दिस इज बेसिकली अ फैक्ट. This is not an assumption, isn't it? What do you say? Basically, this is half-baked, isn't it? It is already saying Supreme Court has rejected an appeal. So who would reject the appeal? Which has authority to do that. So again, even if this is not there, I can make this statement. All right. So traditional values and no political resistance, I'm sorry, traditional values and political resistance are not the primary obstacles to legalizing same-sex marriage in India. So if I say no to this, I cannot make this conclusion at all. ये conclusion की कोई validity रहेगी क्या? अगर मैंने इसको no बोल दिया तो कि they are not primary obstacles. तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता. And hence this becomes the strong assumption. ठीक है? So I repeat, first read the question stem, then read the passage accordingly, what you're supposed to look for. Then you should eliminate the obviously wrong answers. When you're left with two options or three options to choose from, apply the litmus test for assumption. Please mind it.
मैंने ये लिटमस टेस्ट आपको assumptions के लिए दिया है. क्यों? क्योंकि assumption is something which forms the foundation or basis for the author's conclusion. तो अगर हमने इसको डिफीट कर दिया तो ऑथर का कंक्लूजन भी धराशायी हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा. And hence, when you negate the option and the author's conclusion makes no sense at all, that automatically becomes the right answer. ठीक है? Shall we move on? Let's move to the next question. Is there any doubt? Assumptions के question में कोई single doubt भी आ रहा है तो just write it on the chat box. I love to clear that. All right, let's move to the next question then. Go ahead and solve. Now, when you read the question stem, you find that this is not about assumption. It says, which one of the following most accurately expresses the main conclusion of the argument? So here you're supposed to focus on what is the conclusion. Hello, Harsh. Harsh, E is obviously wrong, or you are opting it as your answer. I don't want any answer right now. I want you to identify the obviously wrong options. So there can be 2 or 3 options which are obviously wrong. I want you to first identify them. Don't be in a rush to mark the right answer. Okay, let's discuss it together. It says the electoral bond scheme EBS in India, introduced to streamline political donations, has sparked controversy over its impact on transparency in political funding. Okay. Okay, Neha. Fair. Let's have a discussion first. All right. You're on the right track. Satya, Sayantan, and Neha. All right. I'm so proud of you. So let's discuss it. The electoral bond scheme in India has introduced to streamline political donations. तो उसका purpose क्या है? To streamline political donation. But it has sparked controversy over its impact on transparency in political funding. Challenge for potentially violating citizens' right to know the scheme
is criticized for obscuring corporate donor identity. Obscure करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को छुपाना, किसी चीज पे ग्रहण लगाना, ठीक है? तो कॉर्पोरेट डोनर्स की जो आइडेंटिटी है उसको छुपा लेगी ये वाली जो स्कीम है वो। एंड इट विल फैसिलिटेट एनोनिमस मतलब बिना नाम के, पोटेंशियली करप्ट कंट्रीब्यूटर्स। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल फंडिंग कौन से डोनर्स दे रहे हैं, क्योंकि डोनर्स की आइडेंटिटी जो है वो हमको नहीं बताई जाएगी। देयर वुड बी नो ट्रांसपेरेंसी इन दैट। Despite the Supreme Court's reluctance to intervene, the scheme's constitutionality remains under scrutiny. Scrutiny मतलब जांच के घेरे में आना, ठीक है? किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं होना, that is scrutiny, ठीक है? With concerns about its influence on democratic process and the potential for undue corporate and foreign influence on governance. तो बेसिकली यहां पर कंक्लूजन क्या निकाला जा रहा है? व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? चल, लेट्स फर्स्ट ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करते हैं। The EVS, while intended to streamline political donations, यहां तक तो बिल्कुल सही जा रहा है, has inadvertently compromised the transparency of political funding, ये भी सही जा रहा है। लेकिन इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता हमको अगर, तो हम इस ऑप्शन को मार्क कर देंगे, विच वुड बी रॉन्ग। इनएडवर्टेंटली मतलब क्या होता है? बाय चांस, बाय एक्सीडेंट, और एक्सीडेंटली बाय चांस। ठीक है, तो ये बाय चांस हो रहा है क्या? नहीं। वो तो अगर बाय चांस हो रहा होता तो इतने सारे उसके ऑपोजिशंस नहीं होते, इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो बाय चांस तो ये नहीं हो रहा, so it becomes wrong. The Supreme Court's reluctance to intervene, यहां तक तो सही जा रहा है, because reluctance to intervene की बात तो हो रही है, in the ABS controversy highlights the complexity of the issue and need for judicial caution. Is that what he is trying to conclude here? Obviously wrong. Yes? All right, Divyansh. The constitutionality of EBS is questionable. This is absolutely correct. Given its potential to violate citizens' right to know, यहाँ भी बिल्कुल सही है, and its impact on transparency in political funding. देखो, ये transparency in political funding की बात हो रही है, then violating the citizens' right to know की बात हो रही है, ठीक है? And it is under scrutiny, it is questionable, इसकी भी बात हुई है। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। So let's keep it on hold. अभी कुछ गलत नहीं दिख रहा उसमें। The EBS has been effective in its primary goal of streamlining political donation. ये तो EBS को इफेक्टिव बता रहा है, streamlining political donation despite the controversies surrounding it. तो ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहा है। जहां ये उसको क्वेश्चन कर रहा है, उसको स्क्रूटनाइज कर रहा है, ये डी वाला ऑप्शन तो उसको इफेक्टिव बता रहा है, तो बिल्कुल ही गलत है, ऑब्वियसली रॉन्ग। The potential for anonymous contributions through the EBS possess a significant risk of corrupt practices in political funding. ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। Now we have two options which seem to be correct. और यहां पर हमको क्या करना है? कंक्लूजन निकालना है, मेन कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब कौन सा कंक्लूजन सही, कौन सा गलत, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमें तो दोनों ही सही लग रहे हैं और दोनों ही सही हैं भी, कहीं कुछ गलती तो दिख नहीं रही है। तो अब इन दोनों में से सही कौन सा और गलत कौन सा, कैसे चूज करें? तो हमेशा ध्यान रखो, मेन कंक्लूजन शुड एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट का मतलब
कैप्सूल होती है ना, हम दवाई खाते हैं कैप्सूल, तो कैप्सूल क्या करती है, सारे तरह की दवाई को एक छोटे से कैप्सूल के अंदर बंद कर देती है। तो मेन कंक्लूजन वो होगा विच वुड एनकैप्सुलेट ऑल द मेजर पॉइंट्स, it should not leave any important fact or important point। तो अब इन दोनों का लिटमस टेस्ट क्या होगा कि दोनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें द द important point which is very important, mention of the passage has been ignored या it has not been included। ठीक है, देखो यहां पर अगर हम ई से सी को कंपेयर करते हैं तो ई बोल रहा है द पोटेंशियल फॉर एनोनिमस कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू ईबीएस पोजेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन पॉलिटिकल फंडिंग। तो ये सिर्फ बात कर रहा है एनोनिमस कंट्रीब्यूशन और उसके कारण होने वाली सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ करप्शन। तो दिस इज लिमिटेड टू ओनली पॉलिटिकल फंडिंग एंड रिस्क ऑफ करप्शन। वेर इज ऑथर का कंक्लूजन क्या है, कंसर्न क्या है, कंसर्न इज मेजरली ऑन इन्फ्लुएंस ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड सिटीजन का जो राइट है, राइट टू नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ई वाले कंक्लूजन में मिसिंग है, जबकि सी वाला जो ऑप्शन है वो सब कुछ इंक्लूड कर रहा है। देखो ये बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ईबीएस इज क्वेश्चनेबल, तो वो स्क्रूटनी की बात कर रहा है। गिवन इट्स पोटेंशियल टू वायलेट सिटीजन्स राइट टू नो, तो वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहा है। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, तो ये करप्शन की भी बात कर रहा है। तो इस वाले ऑप्शन ने तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड किया एंड हेंस दिस इज द होलसम आंसर। मेकिंग सेंस? हार्दिक, दिव्यांश, नेहा, सयंतन, हर्ष, are you getting my point? Okay. Okay, Biju. I'm happy that you are able to understand. Any doubt? Slightest of the doubts? 2 दिन बचे हैं एग्जाम में. This is the time when you should clear all your doubts. Let's move to the next question then. Read the question stem. Which one of the following principles, if valid, would most help to justify economist reasoning? So when you read the passage, you have to identify what is the line of reasoning of the economist here. Go ahead.
Okay, let's do it together. इकोनॉमिस्ट की रीजनिंग, उसका क्या कंक्लूजन है, उसका लाइन ऑफ रीजनिंग क्या निकल के आ रहा है, उस पर हमारा पूरा पूरा फोकस रहेगा. ठीक है. इकोनॉमिस्ट सैंक्शन Economic sanctions are often proposed as a non-violent means to pressure governments to change their policies. However, sanctions usually harm the citizens of the targeted country more than its leaders. This can lead to increased suffering and discontent among the populace, often without achieving the desired policy change. So what's the conclusion drawn? That ये जो sanctions हैं, they are not able to achieve the desired policy change. In fact, they, on the contrary, harm the citizens. Isn't it? So now, obviously, wrong कौन से हैं? Options. Sanctions are an effective diplomatic tool because they directly impact the decision makers of a country. ये तो बिल्कुल opposite बात चली गई. Throw it out of the window. Now, economic measures should primarily target the well-being of general population to be effective. Okay, nothing seems to be wrong here as such. Let's keep it. क्योंकि वो basically economic measures should primarily target the well-being of the general population to be effective. Could be. Obviously wrong तो नहीं लग रहा. The primary goal of economic sanctions should be to bring about change in government policies regardless of the impact on citizens. Oh, यहां तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन यहां पर आकर ट्विस्ट आ गया. It should not regard anything on citizens. ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात हो गई. वो तो कह रहे हैं कि वो सिटीजन्स को हार्म करती है, इसलिए वो डिजायर्ड चेंज नहीं ला सकती. Economic policies, including sanctions, should be evaluated based on their impact on the population, not just their political effectiveness. तो यहाँ पर एक तो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहा है, उनका किस बेसिस पे इम्पैक्ट होना चाहिए और उनका कहाँ पर इफेक्टिवनेस नहीं देखना चाहिए, ये सारी चीजें इंक्लूड कर रहा है. एंड हेंस दिस इज आल्सो करेक्ट. सो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. तीन ऑप्शंस तो यू हैव ऑलरेडी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो. ठीक है, अब दो ऑप्शंस बचते हैं. हाउ विल यू इवैल्यूएट? फर्स्ट, इकोनॉमिक मेजर्स की बात हो रही है, जबकि यहां पर स्पेसिफिकली सैंक्शंस की बात हो रही है, पॉलिसीज की बात हो रही है. ठीक है. दूसरा, शुड प्राइमरली टारगेट एट द वेल-बीइंग ऑफ द जनरल पॉपुलेशन. तो यहां पर वो कह रहे हैं दैट यूजुअली हार्म द सिटीजन. वेदर इट शुड बी फॉर द वेल-बीइंग और वेदर इट शुड नॉट बी, दैट इज नॉट वेरी क्लियर. यहां पर वो कह रहे हैं कि वो हार्म करता है. Whether it should target the well-being or it should not, it should be unaffected, like the population is unaffected by that. That's not very clear. So यहाँ पर बोल रहा है economic policies including sanctions should be evaluated. मतलब किसका evaluation हो रहा है? Sanctions का. और यहाँ पर वो clearly बोल रहा है कि it should target on only the well-being of the people. ठीक है. तो यहाँ पर उसके इवैल्यूएशन के बेस की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर एक जनरल समझाइश दी गई है कि उसको इस तरह से होना चाहिए. सो on that grounds B loses and E wins. दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दो चीजों का डिफरेंस है. सबसे पहला, इट्स नॉट अबाउट मेजर्स, इट्स अबाउट सैंक्शंस. ठीक है. दूसरा, इकोनॉमिस्ट का जो कंसर्न है, इट इज नॉट ऑन द वेल बीइंग, दैट्स नॉट द टेस्ट कि वो वेल बीइंग हो रहा है या नहीं हो रहा. इट्स बेसिकली क्या इम्पैक्ट होता है पॉपुलेशन पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसा. That should be the base for evaluation of the sanction. Whether that sanction will be effective or no, that should be evaluated based on the impact on the population.
ठीक है, and hence E becomes the right answer. If I say E is valid, economic policies, including sanctions, should be evaluated based on their impact on the population, not just their political effectiveness. I can very well conclude this that sanctions, uh, this can lead to uh, often without achieving desired policy and change. So ये जो line of reasoning है इसको basically हम इस तरह से conclude कर सकते हैं कि क्योंकि sanctions जो हैं they harm citizens and they hardly affect the leaders, तो जो आपको अचीव करना है उस पॉलिसी से वो नहीं हो पाता, and hence what should be the basis for evaluation? Impact on the population. ठीक? Any confusion? I don't think so. सबका आंसर E ही आया है. Let's move. The pattern of reasoning in the argument above is most similar to that in which one of the following arguments. Now, this is something that you have to really be cautious about. यहाँ पर पैटर्न ऑफ रीजनिंग, लाइन ऑफ रीजनिंग की बात हो रही है कि इस आर्ग्यूमेंट में जो रीजनिंग चल रही है वैसी ही रीजनिंग इनमें से किस में चल रही है. All right. So take your time, read properly, try and identify the line of reasoning. Okay, Anand, anytime, dear. ये सब आप ही के लिए बने हुए हैं. Just try and solve it along with me, and I'm sure कि 7 को जब आप ZAT दोगे, you'll be really happy and comfortable solving such critical reasoning questions. Thank you so much for attending the classes. Okay, let's do it together. A psychologist posits that dreams reveal deep subconscious desires. So, this is the statement of psychologist. However, since dreams are often abstract
and not directly related to specific real life events or objects, the subconscious desires they supposedly reveal would also have to be abstract. Because dreams are abstract, the desires have to be abstract. But abstract entities cannot have desires. अगर जो सबकॉन्शियस डिजायर्स हैं तो वो कह रहा है कि जो सबकॉन्शियस डिजायर्स वो रिवील कर रहे हैं दैट इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन अगर वो एब्स्ट्रैक्ट है तो उनके डिजायर्स होने ही नहीं चाहिए। जो चीज एब्स्ट्रैक्ट है उसके क्या डिजायर्स। देयरफॉर ड्रीम्स कैन नॉट रिवील डीप सबकॉन्शियस डिजायर्स। तो आप देखो साइकोलॉजिस्ट की जो स्टेटमेंट है उसी को उन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट किया हुआ है और हाउएवर यूज किया हुआ है। वो कह रहा है ड्रीम्स रिवील डीप सबकॉन्शियस डिजायर्स, लेकिन ऑथर का कहना है कि क्योंकि दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट हैं और इसलिए किसी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी का कोई डिजायर हो ही नहीं सकता, एंड हेंस ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। ठीक है, अब 5 ऑप्शंस है, पांचों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिमिलर रीजनिंग चल रही है, जो पैटर्न ऑफ रीजनिंग है। मतलब कोई चीज को पहले हमने हाँ बोला, फिर उसको हमने बोला कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां पर ड्रीम्स और सबकॉन्शियस डिजायर्स दोनों ही बात एब्स्ट्रैक्ट है और क्योंकि किसी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी का कोई डिजायर नहीं हो सकता इसलिए वो रॉन्ग है। सेम लाइन ऑफ रीजनिंग पे हमको चलना है। ठीक है, अब फिलोसोफर्स आर्ग्यू, यहां पर साइकोलॉजिस्ट था, यहां फिलोसोफर आ गया। तो फिलोसोफर आर्ग्यू दैट ट्रू नॉलेज इज अटेनेबल थ्रू प्योर रीजन। ट्रू नॉलेज, प्योर रीजन। However, pure reason deals with abstract concepts rather than concrete realities. Since true knowledge must be about concrete realities, it is illogical to claim that pure reason can lead to true knowledge. ठीक है, यहां पर लगभग लगभग वैसा ही लाइन ऑफ रीजनिंग चल रहा है। यहाँ वो ड्रीम्स की बात कर रहा है, यहाँ वो नॉलेज की बात कर रहा है, यहाँ वो सबकॉन्शियस डिजायर्स की बात कर रहा है, यहाँ वो रीजन की बात कर रहा है। ये दोनों ही चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। और क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द रीजन it is illogical to claim that pure reason can lead to true knowledge. तो ये एकदम गलत तो नहीं लग रहा, लाइन ऑफ रीजनिंग सही चल रही है। Some environmentalists claim, अब यहाँ साइकोलॉजिस्ट था, यहाँ पर उन्होंने उसको रिप्लेस करके एनवायरमेंटलिस्ट कर दिया। ठीक है, some environmentalists claim that nature inherently possess rights। तो यहाँ नेचर और उसके राइट्स की बात हो रही है। However, rights are typically attributed to individuals or groups, not abstract identities or entities like nature. Since nature is not specific individual, it cannot possess rights, thus invalidating the environmentalist claim. तो यहाँ पर नेचर को कंपेयर किया है स्पेसिफिक इंडिविजुअल से, मतलब कॉन्क्रीट आइडेंटिटी से, जबकि राइट्स जो है उसको कहा गया है कि दे बिलोंग टू ओनली इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्क्रीट के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड हेंस दिस सीम टू बी रॉन्ग। Linguists suggest that language shapes thought. So this is language and then thought. तो इन दो चीजों को आपस में रिलेट किया हुआ है। However, thought is an abstract concept that cannot be directly observed or measured. Since language is concrete system of symbols, it cannot shape something as abstract and unobservable as thought. So यहाँ पर अगेन वही प्रॉब्लम जा रहा है कि लैंग्वेज कॉन्क्रीट है लेकिन थॉट्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है।
तो कोई कॉन्क्रीट चीज किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को शेप नहीं दे सकती. So again, this is wrong. Nutritionist often says that a balanced diet contributes to overall well-being. तो ये balanced diet को किससे relate कर रहा है? Overall well-being से. Well-being, however, is a subjective and abstract concept. Since a balanced diet is a concrete regimen, it cannot directly contribute to something as abstract as overall well-being. Again, यहाँ पर डाइट को कॉन्क्रीट बोला हुआ है और वेल बीइंग को एब्स्ट्रैक्ट. वही जैसी सी में लाइन ऑफ रीजनिंग चल रही है, डी में भी वैसी ही चल रही है. Art critics often assert that art evokes emotional responses. So this is art and emotional response. तो इन दोनों को रिलेट किया हुआ है. However, art is a collection of materials like paint and canvas, which are concrete objects. तो यहाँ पर फिर ये धक्का खा गया, क्योंकि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पर ये आर्ट को कॉन्क्रीट बता रहा है, यहाँ पे डाइट को वो कॉन्क्रीट बता रहा है. सो अगेन दिस इज रॉन्ग. तो यहाँ तो ऑब्वियसली रॉन्ग रीजंस चारों आ गए, और ऑब्वियसली राइट आंसर फिर इसलिए एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वैसी की वैसी लाइन ऑफ रीजनिंग चल रही है. देयर इज नथिंग लाइक दिस इज कॉन्क्रीट एंड दिस इज एब्स्ट्रैक्ट. बिल्कुल क्लियर रिजेम्बलेंस आ रहा है कि ट्रू नॉलेज और प्योर रीजन दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज हैं, ठीक है, rather than concrete realities. और इसीलिए ट्रू नॉलेज को तो हमेशा कॉन्क्रीट रियलिटी के साथ एसोसिएट करना चाहिए. therefore it cannot be with pure reason. ठीक है, a little confusing I'm sure, but when you read according to the passage, you will very clearly realize that the passage is about abstract entities. Both the entities are abstract, dreams as well as desires. Similar to that, true knowledge and pure reason both are abstract. लेकिन बाकी चारों में one is abstract, another one is concrete. Concrete मतलब जो रियलिटी में है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है बिजू? All right, let's move to the next question. One word of caution. जैसे अभी मैंने यहाँ पर तो तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, तो वो थोड़ा सा इजी लग रहा है. लेकिन एग्जाम में जब जैट का पेपर देने बैठो और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ रीजनिंग, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर एनी तुक्का. ओके, आई वॉन्ट यू टू लीव दैट क्वेश्चन देन. डोंट वेस्ट टाइम. एक बार रीड करो, अगर समझ में आता है and you are able to eliminate the obviously wrong answers, so then you can make a educated guess. Otherwise, you shouldn't waste time. Okay, let's move to the next question. Hi Nupur, joined late. I'm sure you are doing well. You're preparing well. All right, let's read it together. Now you can see me also. The argument's reasoning is flawed because, तो रीजनिंग इज फ्लॉड. ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जैट का कि लाइन ऑफ रीजनिंग में फ्लॉ क्या है, वेयर इज इट गोइंग रॉन्ग. फ्लॉ का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट या फिर एरर. ठीक है, तो यहाँ तो गलती निकालनी है सीधे सीधे, और गलती निकालने में तो हमको महारत हासिल है. हाय एलेक्स.
अभी मैंने ज्वाइन किया। हाँ, तुम काफी लेट हो गए हो। सेशन 1.5 घंटे से चल रहा है। इट स्टार्टेड एट 6। नेवर माइंड, कंटिन्यू विथ मी। ठीक है, यू कैन वॉच इट लेटर ऑन ऑल्सो। अभी जितने क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर सकते हो करो साथ में, ठीक है। इस आर्ग्यूमेंट में कहाँ गलती हो रही है? क्वेश्चन है। ऑल राइट नेहा, गुड हार्दिक, वेरी गुड, यूर ऑन द राइट ट्रैक। चलो, it is often argued that the most successful people are those with the highest level of motivation. तो यहाँ पर सक्सेस को किससे रिलेट किया है उन्होंने? लेवल ऑफ मोटिवेशन से। Therefore, it can be concluded that without high motivation, success is not attainable. Line of reasoning समझ में आ रही है? This implies that motivation is both necessary and sufficient for success. It is not just necessary, it is also sufficient. सिर्फ मोटिवेशन से ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। और अगर मोटिवेशन नहीं है तो सक्सेस इज नॉट अटेनेबल, ठीक है। अब इसमें फ्लॉ कहाँ आ रहा है? It assumes that success in life is the only valuable measure of person's worth. तो यहाँ तो कंपैरिजन ही गलत चला गया। या तो सक्सेस को इंसान की वर्थ से कंपेयर किया जा रहा है, तो दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग, क्योंकि लाइन ऑफ रीजनिंग ही चेंज हो गई। Confuses the role of motivation in achieving success with other factors that contribute to success. Other factors की बात हुई है क्या यहाँ पे? ठीक है। Uses a key term in a way that shifts in meaning from one part of the argument to other. इसको रख सकते हैं हम साथ में, क्योंकि की टर्म यूज किया है उसने, हाई मोटिवेशन। Overlooks the fact that not everyone aspires to the same definition of success. ओ, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट जा रहा है। अगर सबकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एक जैसी नहीं है तो या तो ये कंक्लूजन, तो ये तो ओवरलुक नहीं किया है उसने। Overlooks the fact that not everyone aspires to the same definition of success. So he's not interested in that. He's interested in whether motivation is sufficient and necessary for success or no. ठीक है? So again, it presumes that a condition necessary, what is the condition? High motivation, automatically ensures success. कोई भी चीज होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और उनमें से एक कंडीशन अगर सही है या नेसेसरी है तो इट डजंट कंक्लूड कि दैट ओनली एंश्योर सक्सेस। सिर्फ मोटिवेशन से ही सक्सेस हो सकता है, या विदाउट मोटिवेशन सक्सेस हो ही नहीं सकता है। तो उसने बहुत सारी कंडीशंस में से एक स्पेसिफिक कंडीशन को टारगेट किया और कहा कि उसने वो अज्यूम कर लिया कि दिस इज ओनली सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। एंड हेंस दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर। अब सी और ई को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा सही लग रहा है, मतलब फ्लॉ किस में लग रहा है, सॉरी, ठीक है। तो फ्लॉ कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है? Uses a key term in a way that shifts in meaning from one part of the argument to other. यहां पर की वर्ड है हाई मोटिवेशन, इसका कहीं पर भी मीनिंग अलग अलग नहीं आ रहा है। मोटिवेशन और हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन रिमेन्स द सेम। इट इज ओनली that he has taken for granted that it is the only necessary and sufficient condition for success. Hence, C loses ground
and E becomes the right answer. और तुम सब लोगों का आंसर सही आया है, ठीक है? गलती निकालने में तो हम उस्ताद हैं, हमने किसको छोड़ा? ऑल राइट, जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आई होप नहीं है, क्योंकि सबका आंसर आ गया है। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the art critic's reasoning is most vulnerable to criticism because vulnerable मतलब at risk, ठीक है? मतलब क्रिटिक की जो रीजनिंग है उसका फ्लॉ क्या है? एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं वो? व्हाट इज द फ्लॉ? हाय हर्ष, हाउ आर यू? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? सॉल्व क्वेश्चन विथ मी। Read the question stem first. Then, according to the question, what is asked in the question, read the passage. The question is asking you to identify the flaw, and hence, while you're reading, target what is the flaw in the line of reasoning. On what grounds you can challenge the author? Hi Nishtha, you're quite late in joining, dear. Never mind. Solve the question. I hope the question is visible to you. Am I blocking it? Let me see. I suppose not. अभी तो तुम्हें मेरी शक्ल दिख सकती है। Hi. All right. Shall we discuss? Art critic says or claims the claim that the recent art exhibition featured several plagiarized works is baseless. What is plagiarized or what is plagiarism?
एनी आइडिया व्हाट इज प्लेजरिज्म? कॉपी करना, ठीक है, मोस्टली नकल करके बनाना, ठीक है, चाइनीज आइटम्स। ऑल राइट, so the claim that recent art exhibition featured several plagiarized work is baseless। वो कह रहा है ये बेसलेस है। हाँ, कॉपिंग और फोर्जरी, बिल्कुल। हार्दिक, फोर्जरी ज्यादा करके बैंक और अकाउंट्स में होती है, प्लेजरिज्म इज मोस्टली नकल करना। पर ठीक है, टू एन एक्सटेंट यू कैन से, ठीक है, धोखा देना। Professional artists create original works to establish their unique style and reputation. Displaying plagiarized art would easily be identified by critics and peers. वो क्या कह रहा है? It will be easily identified, damaging the artist's credibility and career. Therefore, it's improbable that a professional artist would risk their reputation by plagiarizing. तो वो बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन निकाल रहा है कि भाई आर्टिस्ट की पूरी क्रेडिबिलिटी और उसका पूरा करियर दांव पे लगा हुआ है, इसीलिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर प्लेजरिज्म किया तो कोई भी क्रिटिक उसको आसानी से पकड़ लेगा, ठीक है। अब हमें इसमें फ्लॉ निकालना है कि ऑथर कहाँ गलत जा रहा है, या ये जो आर्ट क्रिटिक है ये कहाँ गलत जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रॉन्ग वाले जो ऑप्शन है पहले उनको एलिमिनेट कर देते हैं। The art critic's reasoning is most vulnerable to criticism because it ignores the possibility that not all artists in exhibition are established professionals। क्या यहाँ पर वो ऐसा बोल रहा है कि ऑल आर्टिस्ट आर प्रोफेशनल्स? वो ये बोल रहा है कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो कभी भी इस तरह की प्लेजराइज्ड वर्क्स नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इट इज टॉकिंग अबाउट कंपेयरिंग ऑल द आर्टिस्ट बाय, मतलब सेइंग दैट दे आर ऑल प्रोफेशनल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है। सो दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट द फ्लॉ, ऑब्वियसली रॉन्ग, ठीक है। नाउ ये प्राइमरी उसका लाइन ऑफ रीजनिंग नहीं चल रहा, ठीक है, तो इसलिए ये फ्लॉ नहीं होगा। फेल्स टू कंसिडर दैट सम आर्टिस्ट माइट प्लेजराइज ड्यू टू लैक ऑफ ओरिजिनल आइडियाज। अब यहां पर क्या हो रहा है? वेयर इज इट गोइंग राइट और वेयर इज इट गोइंग रॉन्ग? इट इज टॉकिंग अबाउट सम आर्टिस्ट, they might plagiarize, तो he fails to consider that, it could be an option, ठीक है, ऐसे एकदम आउटराइटली गलत तो नहीं लग रहा। Presumes without sufficient evidence that all art critics can accurately identify plagiarism। पहली चीज तो ये कि वो ऑल आर्ट क्रिटिक्स कैन डू दैट नहीं बोल रहा, दूसरा वो एक्यूरेसी की तो बात ही नहीं कर रहा, ये एक्यूरेटली वाली बात तो कर ही नहीं रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि आर्टिस्ट जो होते हैं उनको ये पता होता है कि जो आर्ट क्रिटिक्स हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्लेजरिज्म को। एक्यूरेटली करते हैं, नहीं करते हैं, सारे आर्ट क्रिटिक्स करते हैं, नहीं करते हैं। सो दिस इज नॉट एट ऑल बीन टॉक्ड अबाउट, तो ये तो फ्लॉ हम हो ही, मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही जा रहा है, तो फ्लॉ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऑब्वियसली रॉन्ग। ऑल राइट, assumes without justification that the desire for a unique style outweighs the temptation to plagiarize। अब यहां पर ये कंपैरिजन किसका हो रहा है? टेम्पटेशन टू प्लेजराइज और डिजायर फॉर यूनिक स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का ही मेंशन किया हुआ है और वो यही बोल रहा है कि क्योंकि उनकी यूनिक स्टाइल और रेपुटेशन होती है, इसीलिए वो कभी भी अपनी क्रेडिबिलिटी और करियर को दांव पे नहीं लगाएंगे। दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबली द फ्लॉ, ठीक है, कि वो इस चीज को अज्यूम कर रहा है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। illicitly infers
from the fact that most works in exhibition are original, that all are authentic. तो यहाँ illicit तो कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। और दूसरा, मोस्ट वर्क्स आर ओरिजिनल, ऑल आर ऑथेंटिक, इसमें कोई फ्लॉ नजर नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ पर लाइन ऑफ रीजनिंग का कोई फ्लॉ नहीं नजर आ रहा, एंड हेंस बी एंड डी आर दी ऑप्शंस। ये कंटेंडर्स हैं, इन दोनों में कंपटीशन है, कौन सा फ्लॉ है और कौन सा नहीं है। फ्लॉ कैसे निकालेंगे? फ्लॉ कैसे निकालेंगे? जो उसको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। ए, सी और ई तो आउटराइटली रिजेक्ट हो गए। अब हमारे पास बचता है बी और डी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। लेट्स सी। इसमें लिटमस टेस्ट लगा के देखें। Okay, all of you are going with D except for one, where B को तुम क्यों एलिमिनेट कर रहे हो? व्हाट्स द रीजन? First, it is talking about only some artists. Here, he is talking about, I mean, he's not talking about some or all. He's just talking in the general sense. ठीक है? दूसरा, he is not at all saying that they might have lack of original ideas. He says they create original works to establish unique style and reputation. All right. So here, this cannot be the flaw because that is not the primary focus of the passage. Passage का primary focus दो चीजों पे है। पहला, desire for unique style, जो कि उसने इस sentence में बोला है, और दूसरा, temptation to plagiarize। ठीक है, तो उसका ये कहना है कि temptation to plagiarize हो ही नहीं सकता। Why? Because आर्टिस्ट की क्रेडिबिलिटी और करियर दांव पे लगा हुआ है। और हमने यहाँ पर क्या बोला कि उसने ऐसा अज्यूम किया है विदाउट जस्टिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया उसका। उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि अरे भाई उसका तो करियर दांव पे लगा है, तो वो कैसे प्लेजराइज करेगा। तो ही जस्ट डज नॉट गिव एनी जस्टिफिकेशन, ही इज अज्यूमिंग इट। ठीक है, एंड हेंस डी सीम्स टू बी दी मोर अप्रोप्रिएट justification for the flaw, and that is the answer. ये डायरेक्टली टारगेट कर रहा है जो अंडरलाइन उसकी लाइन ऑफ रीजनिंग चल रही है। ऑथर क्या बोल रहा है और ऑप्शन क्या बोल रहा है, वो बिल्कुल इन लाइन है, एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठा हुआ है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, फ्लॉ निकालने के लिए लाइन ऑफ रीजनिंग को ही टारगेट करेंगे। हमने फ्लॉ जो बताया है उसको डायरेक्टली अटैक किस पे करना है? ऑथर की रीजनिंग पे। ऑलराइट, शैल वी मूव? ऑलराइट, let me move out so that I don't obscure the screen. The reasoning in the economist's argument is flawed because, again इसमें क्या निकालना है? Flaw, मतलब कहाँ गलती हो रही है।
Shall we solve together? What is the economist's argument? इकोनॉमिस्ट का आर्गुमेंट क्या है? इकोनॉमिस्ट कह रहा है द बिलीव दैट ऑटोमेशन विल लीड टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इज ओवर सिंप्लीफाइड. मतलब ऑटोमेशन विल लीड टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्टिफाइड. ठीक है. While it's true that automation can replace certain jobs, it also creates new opportunities in sectors like technology and service. तो यहाँ पर वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ऑटोमेशन हालांकि बहुत सारे जॉब्स में रिप्लेस कर देगा, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज भी तो बनाएगा. ठीक है. Moreover, history has shown that technological advancements often lead to more jobs, not fewer, as new industries and needs emerge. तो वो हिस्टोरिकल डेटा देकर आपको रेफरेंस दे रहा है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को लोगों ने बुरा समझा, ये समझा कि इससे हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, लेकिन ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुए और नई इंडस्ट्रीज और नई नीड्स के साथ में ज्यादा लोगों को जॉब मिला. ठीक है. दिस इज व्हाट द इकोनॉमिस्ट आर्ग्यूमेंट इज. अब हमको उसमें फ्लॉ निकालना है, इसमें एरर कहाँ जा रहा है. ठीक है. अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? इट इग्नोर्स द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ जॉब लॉसेस ड्यू टू ऑटोमेशन, फोकसिंग ओनली ऑन लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट. सो ना तो वो इमीडिएट इम्पैक्ट की बात कर रहा है, ना वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, वो यहाँ पर ओवरऑल की बात कर रहा है. ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा, उसमें कितने लोगों को रिप्लेस किया जाएगा और कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी. ना तो वो इमीडिएट इम्पैक्ट की बात कर रहा है, ना कि वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात कर रहा है. ये हमारा खुद का अजम्पशन हो जाएगा अगर हमने इसको वैलिड समझ लिया तो. ठीक है. तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है. Now, second, overlooks the specific skill set required for jobs created by automation. तो ये specific skill set की बात कर रहा है, which may not be accessible to those displaced. ठीक है. अब यहाँ पर वो स्किल गैप की बात कर रहा है. ठीक है. लेकिन जो ऑथर है, जो इकोनॉमिस्ट है, उसका आर्ग्यूमेंट हिस्ट्री के ऊपर है, ना कि स्किल के ऊपर. वो स्किल और स्किल क्रिएशन की बात नहीं कर रहा. वो ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में स्पेसिफिकली एक्सेसिबिलिटी होगी नहीं होगी. वो सिर्फ इतना कह रहा है कि हिस्टोरिकली रही है ज्यादा नौकरियां और इसलिए इस बार भी ज्यादा होंगी. तो ये वाला जो ऑप्शन है, अगेन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू आइडेंटिफाई द फ्लॉ, क्योंकि लाइन ऑफ रीजनिंग अलग अलग जा रही है. Assumes the past trend of technology creating more jobs will automatically continue with automation. Past trend of technological advancement automatically automation के साथ भी लागू होता है. This is what he is assuming. तो ये तो बिल्कुल valid लग रहा है क्योंकि exactly यही उसने किया है. Fails to consider the varying impact of automation. Varying impact नहीं, वो सिर्फ एक ही इम्पैक्ट की बात कर रहा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. तो ये तो भैया खिड़की से बाहर फेंक दो, कुछ भी बोल रहा है. presumes that new opportunities created by automation will be sufficient to compensate for all jobs lost. So what is wrong here? मतलब क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है? ये भी तो सही लग रहा है. ई. What's wrong in that? What should you prefer? फ्लॉ स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये वाला या ये वाला? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था लाइन ऑफ रीजनिंग को ही टारगेट करना है. यहाँ पर वो सफिशिएंट टू कॉम्पनसेट फॉर ऑल जॉब्स की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर तो वो कह रहा है कि जितने जॉब्स वो रिप्लेस करेगा ऑटोमेशन, उससे कहीं ज्यादा जॉब्स वो क्रिएट करेगा.
तो सफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी की बात तो बिल्कुल नहीं है. Past trend of technology will create more jobs, and that trend will continue with automation makes more sense. And hence, C is the answer. Any doubt in this? Quite simple. हमेशा ध्यान रखो, अगर आंसर सही मार्क करना है जैट में, तो लाइन ऑफ रीजनिंग को ही अटैक करना सीखो. ठीक है. कई बार दो ऑप्शंस और कई बार तीन ऑप्शंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, या तीनों सही दिखेंगे या तीनों गलत दिखेंगे. ऐसे में ऑलवेज मेक श्योर कि यू कंपेयर दोज ऑप्शंस ऑन द बेस ऑफ रीजनिंग यूज्ड बाय द ऑथर. यहाँ पर उसने हिस्ट्री या हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कंपेयर किया है. उसने कहा हिस्ट्री रही है कि जब जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तब तब ज्यादा जॉब्स बने हैं, तो ऑटोमेशन के टाइम पे भी ऐसा ही होगा, ये उसने अज्यूम कर रखा है. ठीक. ओके. नेक्स्ट. आई सपोज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. तो देखते हैं कौन करता है. All right, let's do it together. Which of the following arguments contains a flaw in reasoning most similar to that in argument above? ठीक है. तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे लाइन ऑफ रीजनिंग आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. सो लेट्स रीड इट. Because judicial corruption is difficult to prove and often goes unpunished, there are few effective measures to prevent it. सबसे पहली चीज, it is difficult to prove.
दूसरा इट गोज अनपनिश्ड, तीसरा फ्यू इफेक्टिव, मतलब यहां पर एक नेगेटिव टोन है, फ्यू का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। देर आर फ्यू इफेक्टिव मेजर्स, मतलब ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर measures to prevent it. Therefore, not all judges have an obligation to maintain integrity in their judicial decisions. ठीक है? So, some judges ought not to be expected to make unbiased decisions. Ought not का मतलब क्या होता है? Ought to मतलब करना ही पड़ेगा. This is obligation. ought हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं किसी चीज के लिए। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे करप्शन केसेस जजेस के जो है या जुडिशियल करप्शन जो है वो प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए अनपनिश्ड निकल जाता है, और उसको सुधारने के या उसको रोकने के, प्रिवेंट करने के बहुत इफेक्टिव मेजर्स भी हमारे पास नहीं है। इसलिए सारे जजेस का ऑब्लिगेशन होगा इंटेग्रिटी मेंटेन करने का, ऐसा नहीं सोच सकते जुडिशियल डिसीजंस में। और कुछ जजेस जो हैं वो अनबायस्ड डिसीजंस नहीं भी लेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, डिफिकल्ट टू प्रूव, गोज अनपनिश्ड, फ्यू इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट इट। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, बी वाला जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है बिकॉज इट इज हार्ड टू डिटेक्ट प्लेजरिज्म in online submission, not all students are held accountable for it. So some students should not be expected to submit the original work. यहाँ पर प्रिवेंट करने की बात नहीं आ रही, प्रूव करने की बात नहीं आ रही, पनिशमेंट की बात नहीं आ रही, या तो सीधा डिटेक्ट की बात आ रही है। तो दिस इज नोवेयर नियर द लाइन ऑफ रीजनिंग। ठीक है, सिमिलरली यहां पर वो कह रहा है because it is challenging to monitor fair play in all sports, not all athletes are held to same standard. यहाँ all sports की बात हो रही है या केवल एथलीट्स की बात हो रही है? तो अगेन लाइन ऑफ रीजनिंग नहीं फॉलो हो रही, सिर्फ मॉनिटर की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये लाइन ऑफ रीजनिंग फॉलो नहीं है। ठीक, सिमिलरली व्हेन इट सेज since it is challenging to enforce laws, traffic laws consistently, not all drivers are obligated to follow them, therefore some drivers should not be expected to obey traffic laws. फिर ये बोल रहा है if it is difficult to regulate environmental pollution effectively, तो यहां पर तो उसने एक कंडीशन ही लगा दी है। ठीक है, ये एक कंडीशन ही है, अगर ऐसा है तो नॉट ऑल कंपनीज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगेन दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग, तो ये भी लाइन ऑफ रीजनिंग के साथ में नहीं जा रहा। ये बोल रहा है सिंस नॉट ऑल टैक्स इवेजन केसेस आर सक्सेसफुली प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि सारे टैक्स इवेजन के केसेस प्रोसिक्यूट नहीं होते हैं सक्सेसफुली। प्रोसिक्यूट मतलब क्या? प्रूव करना, चैलेंज करना, प्रूव करना और पनिशमेंट मिलना। ठीक है, जो कि यहां पर उसने यूज किया हुआ है। नॉट ऑल इंडिविजुअल्स आर ऑब्लिगेटेड टू पे टैक्सेस, दस सम इंडिविजुअल्स शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू पे देयर टैक्सेस। तो ये जजेस के साथ में ज्यादा साउंड कर रहा है। इसमें ए में और डी में क्या डिफरेंस आ रहा है? सिंस इट इज चैलेंजिंग टू एनफोर्स ट्रैफिक लॉस कंसिस्टेंटली, क्या ऑथर ने कहीं पर भी कंसिस्टेंसी की बात की है? नहीं, उसने कहा ऑफन गोज अनपनिश्ड। ठीक है, हेंस अगेन इट इज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग ए वाला ऑप्शन,
ऑब्वियसली रॉन्ग नहीं है, लेकिन इट लूजेस ग्राउंड्स व्हेन कंपेयर्ड विथ बी। हमेशा ध्यान रखो ऑथर ने कौन से पॉइंट्स लिए हैं प्रूव करने के लिए उसके पॉइंट को, क्या रीजंस लिए हैं उसके पॉइंट को प्रूव करने के लिए। बस उसी लाइन ऑफ रीजनिंग को यहाँ पर हमको रिजेंबल करना है। ठीक है। ओके, सो what did you learn from today's lesson or today's session? We started with this. What will you avoid? Reading without knowing why. What do you mean by this? You will read question stem first. All right, so that you get proper direction कि मुझे passage में पढ़ना क्या है. What have I to read and infer from the passage? उसकी line of reasoning को attack करना है, उसका conclusion निकालना है, author का assumption है, author ने क्या conclude किया है वो देखना है, paradox को resolve करना है, करना क्या है. ठीक है, तो हमें क्या करना है ये हमें पता है, तो हम जब रीड करेंगे तो हम स्पेसिफिक मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे, हमें स्पेसिफिक चीज को लोकेट करना है, तो यू विल नॉट गेट बैफल्ड, इधर उधर भटकोगे नहीं. ठीक है, सो यू शुड अवॉइड रीडिंग विदाउट नोइंग व्हाई यू आर रीडिंग. ऑलराइट, तो रीड द क्वेश्चन स्टेम फर्स्ट. Falling in love with answer choices. मैंने क्या बोला था? You should not have your preconceived notions. यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें सही लग रहा है वो सही है, ये जरूरी नहीं है. You should always make comparison. You should always read all the options before you mark answer, before you choose something. अगली बात समझ में? You should not be getting tempted, allured, attracted, ठीक है, by some, excuse me, by some words, which are repeated from the passage. You should not anticipate the correct answer incorrectly. क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया हुआ है, elimination is the key. अभी हमने जो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने क्या किया? हमने ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर जो हैं उनको सबसे पहले उड़ा दिया. ठीक है, एलिमिनेट कर दिया. उससे हमारी लाइफ इजी हो जाती है. कई बार तुम्हें एक ही ऑप्शन मिलता है जो कि सही होता है, तो एक्यूरेसी बिल्कुल इंश्योर हो जाती है. कई बार हमारे पास दो ऑप्शन चॉइसेस होती है, उनमें से हमें एक को चूज करना होता है, तो लाइफ काफी इजी हो जाती है उन दोनों को कंपेयर करने में. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहला काम जो करना है ऑप्शंस में, वो ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है. यू शुड अवॉइड वर्ड वॉचिंग और वर्ड हंटिंग. तुमने अभी खुद देखा कि ऑप्शंस हमें कंफ्यूज कब करते हैं? जब हम सिर्फ वर्ड टू वर्ड उसको मैच करते हैं. ठीक है, अगर हम पैराफ्रेजिंग और कॉन्टेक्स्ट को ध्यान नहीं रखेंगे तो हम हमेशा गड्ढे में गिरेंगे. तो यू शुड ऑलवेज अवॉइड दिस. इसके दोनों चीजें मैंने आपको प्रूव करके बताई हैं दोनों क्वेश्चंस में. ठीक है, किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है सही आंसर वर्बैटिम वैसा रिपीट हो गया है और वो सही भी है. ठीक है, तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखना है कि अधिकतर वो ट्रैप्स होते हैं जिसमें हम गिर जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इट इज टेकन एग्जैक्टली फ्रॉम द पैसेज. लेकिन जब कॉमा के बाद वाला जो पार्ट पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा होता है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा होता है, तो दैट मेक्स द ऑप्शन अ ट्रैप. तो इसलिए इस चीज को हमेशा अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, अगर तुमने ये चीजें ध्यान रखी तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सॉल्व क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. All right. If in case you have any doubt,
You can put those doubts here. I give you 1 minute more, and then we'll end the session. I'm very sure this session would help you. अभी जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो इसको बाद में भी देख सकते हैं. It will be there on YouTube. All right. So do benefit from this. And I'm very sure अगर आप मेरी लाइन ऑफ रीजनिंग के साथ सॉल्व करोगे, it's you know not bragging about myself, but it is very unlikely कि तुम कभी भी गलत मार्क करोगे. Obviously wrong answers पहले eliminate कर देने से you'll automatically come very close to the right answer. ठीक है. बीजू, दिस इज नॉट फॉर आरसीज बच्चे. और आरसीज में मतलब देर आर प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स. किसी को क्या प्रॉब्लम आती है आरसी में, किसी को क्या आती है. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. माय सजेशन इज कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दो, या इसी में कमेंट में जो तुम्हारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो डाल दो. लेटर ऑन आई विल रीड एंड आई विल एड्रेस दैट प्रॉब्लम. ठीक है. बट दिस इज द सेशन फॉर क्रिटिकल रीजनिंग स्पेसिफिकली. आज के सेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी. Else you can put those problems here. I'll address them. ठीक है. So today I'm signing off now from this session. Take very good care of yourself. Namaste.